3 ब्रोमाइड्स एंड सल्फाइड है, जिसके 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी जो कि पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं, उनके आंसर थे विद कोटेशंस। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द स्पेसिफिक क्वालिटीज ऑफ ब्रोमाइड्स, जो कि 2017 में आ चुका है पहले। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ सल्फाइड्स, ये क्वेश्चन 2021 में आया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के पेपर्स में। व्हाट इज द मेन आइडिया इन द एसे ब्रोमाइड्स एंड सल्फाइड्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि 2 तरह से और भी पूछा जा सकता है। अगर आपको ब्रीफली एनालाइज द एसे ब्रोमाइड्स एंड सल्फाइड इन योर ओन वर्ड्स पूछा जाए तब भी आप इसका आंसर वही लिखेंगे, इसका मेन आइडिया ही हम लिखेंगे। हाउ डज बर्जस डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन ब्रोमाइड एंड सल्फाइड, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन नंबर 3 2022 में मेन आइडिया पूछा गया उसका, और 2020 में इसका ब्रीफली एनालाइज ऑफ एसे पूछा गया है। ये चैप्टर नंबर 3 ब्रोमाइड्स एंड सल्फाइड्स इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये पिछले 2-3 सालों से इसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं। 2020 में भी आया हुआ है, 2021 में भी आया हुआ है, 2022 में भी आया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब हम इनके आंसर्स देख लेते हैं। पहले आंसर में हम क्वालिटीज ऑफ ब्रोमाइड्स देखेंगे। Gelett Burgess is a modern American writer who is known in the world of literature for his humorous writings. In an interesting and funny manner, he divides people into 2 large groups, bromides and sulfides. All the people of the world fall in one category or the other. The bromides form the large bulk of the world. The bromides, according to the writer, are those who follow the main traveled roads of life and never going to divert from the common average behavior about anything. They are always living in the most common way of life. They go with the crowd, so to speak. That all bromides are bromidic in every manifestation of their being. They do not take any important decision. They do not take risks. They do not investigate the new and the unknown. Their reactions and responses to things and happenings are never extraordinary and unpredictable. They are always the lead, never the leaders. They are dull and uninteresting lot of mankind. Are uncultured and uncivilized. Uncivilized people, they are greedy and self-centered people. The writer calls them boors, conservatives and Philistines. The Philistines were known for their materialistic approach towards life. They cannot think about fresh ideas. Sometimes they may feel that they are doing something original, but they are totally unable of doing any such things. They always offer dull and routine arguments on every issue of life. One expects originality from them, but one is always disappointed. The writer becomes very bitter when he writes about his lack of originality. Originality was inhabited in him since his great-grandmother's time. He has got the habit. The writer has clearly authenticated these two groups by creating the most important personalities of the world. He represents them by making difference of their mental inclination from history, art, politics, literature, and life. We can see another trait when we know that bromides become sulfides and sulfides become bromides. They are half sulfides and half bromides. According to him, some writers may also have a contrasting personality and style in literature. Its typical examples are Mr. Johnson and Lewis Carroll. अब लास्ट में हम कंक्लूजन लिखेंगे। In nutshell, through these examples, he has successfully and beautifully differentiated the bromides and sulfides and transmit the main idea of his essay. यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, क्वालिटीज ऑफ सल्फाइड इन दिस essay bromides and sulfides. Gelett Burgess has divided human beings into 2 major groups according to their nature. He has used chemical terms for these 2 groups of human beings. He called one group bromides and the other as sulfides. Bromide is a chemical compound of bromine which was initially used to calm the nerves of worried or mentally upset people. Sulfide is a chemical compound of sulfur. This chemical is used in explosives. By nature, bromide is passive while sulfide is active. In this essay, the writer has used the term sulfide for those human beings who do their own thinking. Sulfide is a person who has surprise up his sleeve. He is explosive and unpredictable. One can never foresee what he will do. We never know what he will say or do. He is not always pleasant in his behavior. He may shock or please us by his sudden and spontaneous
Actions, we cannot detect him easily. Sulfides are the reverse of bromides. The sulfides do not exist in large number, as writer says about sulfides. Sulfides come together like drops of mercury in this bromidic world, unknown, unsuspected groups of them scattered over the earth. Sulfides do not follow custom and traditions. They do not live by the rule and route. They do not have their hair cut every month. They are not always punctual in their offices. Their habits of thought are not ready-made. They have original ideas and do not have the ideas of majority. They do not follow the law of averages. They do not follow the law of average. They try to look and do different from others. The writers say that all cranks, all reformers, and most artists are sulfide. The insane asylum have sulfides. They do not speak, dress, or act according to the usual social ways, but their behavior is personal, original, and their own. They do not only do ordinary things in unusual ways, but they do unusual things in ordinary ways. For example, a sulfide can leave his friend suddenly just after saying them farewell, and he may keep the pipe burning while saying a drowning girl. When he presents a gift, it has either rhyme and reason to it. He does not care whether the society likes it or not. His adjustment in society is difficult. The writer has clearly authenticated these groups by quoting the most important personalities of the world. He presents them by making difference of their mental inclination from history, art, politics, literature and life. अगेन हम वही कंक्लूजन यहाँ इस क्वेश्चन के भी लास्ट पे ऐड करेंगे इन नट शेल वाला जो हमने क्वालिटीज ऑफ ब्रोमाइड के लास्ट पे ऐड किया था. ये इन नट शेल through these example he has successfully and beautifully differentiated the bromides and sulfides and transmit the main idea of his essay. अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा आपको ज़्यादा लेंथी लग रहा है तो आप उसको कम कर सकते हैं. आप इसका ये उसका इंट्रोडक्शन ये वाला पार्ट आप कट भी कर सकते हैं. आप सीधा यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं. इन दिस ऐसे द राइटर हैज़ यूज द टर्म सल्फाइड्स. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो पहले 2 क्वेश्चन के अंदर से ही हम लिखेंगे, लेकिन उसमें 2-3 पैराग्राफ्स और ऐड करेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ. क्वेश्चन नंबर 3 में हम जो ऐड करेंगे, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ से. इसका इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ हम लिखेंगे यहाँ तक, जूलियट बर्गस से लेकर अदर्स तक. एंड फिर हम ये वाला पैराग्राफ ऐड करेंगे ब्रोमाइड से लेकर एक्टिव तक. फिर इसके बाद हम एक पैराग्राफ उनकी क्वालिटीज़ पे लिखेंगे, ब्रोमाइड की क्वालिटीज़ और सल्फाइड की क्वालिटीज़. फिर अगेन हम ये सेम पैराग्राफ ऐड करेंगे. वी कैन सी अनदर ट्रेड व्हेन वी नो दैट ब्रोमाइड्स become sulfides and sulfides become bromide. They are half sulfides and half bromides according to him. Some writers may also have a contrasting personality and style in literature. Its typical example are Dr. Johnson and Lewis Carroll. Then हम ये लिखेंगे. Dr. Johnson is a famous neoclassic critic who was sulfide in personality but bromidic in writing. On the other hand, Lewis Carroll, a famous English writer, was bromide in personality but sulfide in writing. फिर हम ये लाइन ऐड करेंगे. Further, writer give us examples of 2 classes of people from history and literature in order to illustrate his points as. अब आप यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स और ऐड करेंगे. ये आपको 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 एग्जाम्पल्स हैं. आप इनमें से कोई भी 2-4 एग्जाम्पल्स ऐड करेंगे उसके बाद, उस पैराग्राफ के बाद. ये आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें. देन फिर आप वही कंक्लूजन वाला पैराग्राफ ऐड करेंगे, ये वाला. ये हर क्वेश्चन के लास्ट पे आपने लिखना है. इन नट शेल थ्रू दीज एग्जाम्पल्स ही हैज सक्सेसफुली एंड ब्यूटीफुली डिफरेंशिएट द ब्रोमाइड्स एंड सल्फाइड्स एंड ट्रांसमिट द मेन आइडिया ऑफ हिज ऐसे. ये आप लिखेंगे और देन आपका क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो जाएगा. ये वाला मेन आइडिया वाला, समरी वाला. ठीक है. मैं क्वेश्चन नंबर 3 का आपको एक दफ़ा दोबारा रिकैप दे देती हूँ. क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ द मेन आइडिया इन द ऐसे ब्रोमाइड्स एंड सल्फाइड्स. ठीक है. यहाँ सबसे पहले ये वाला पैराग्राफ. ठीक है. देन ये वाला पैराग्राफ एक्टिव तक, ब्रोमाइड से लेकर एक्टिव तक. इस पैराग्राफ के बाद आपने एक पैराग्राफ ब्रोमाइड की क्वालिटीज़ पे और एक पैराग्राफ सल्फाइड की क्वालिटीज़ पे लिखना है. उसके बाद
दोनों क्वेश्चंस का कोई भी पैराग्राफ आप ले लें जो आपको बेहतर लगता है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से ये सब लिखना है। फर्दर राइटर गिव्स अस एग्जांपल्स, फर्दर आपने ये यहाँ से एग्जांपल्स नोट कर लो, वो आपने ऐड करनी है 2-3। देन फिर आपने वही कंक्लूजन लेना है इन नटशेल वाला, और वहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होगा। आई होप इट हेल्प्स। अगर अभी भी किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में लिखें, मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगी और रिप्लाई करूंगी, और अगर दोबारा वीडियो बनानी पड़े इस चैप्टर पे तो वो भी बना लूँगी। बाय। Thanks for watching.